Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for March 7th. हमारा फर्स्ट टॉपिक कॉमन करेंसी एंड D8 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक ऑल इंडिया रेडियो में आया था और इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर पिस्ड फॉर अ कॉमन करेंसी लाइक यूरो फॉर यूरोपियन यूनियन for Muslim countries to facilitate trade and commerce between them. The Bangladesh Prime Minister said this during her interaction with a delegation of D8 trade ministers. Now D8 है क्या? So it is an organization for economic cooperation among the 8 Muslim countries and these countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड टर्की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल से रिलेटेड है। ये टॉपिक ऑल इंडिया रेडियो में आया था और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। हरियाणाज यतिन भास्कर दुग्गल won the first prize in the National Youth Parliament Festival 2024. The objective of National Youth Parliament Festival is to hear the voice of youth who will join various careers in the coming years, including public services. And this year's theme is Young Voices, Engage and Empower फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। वही हम नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बैकग्राउंड की बात करें, सो दिस फेस्टिवल इज बेस्ड on the idea given by the Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat address in 2017 and the first edition of National Youth Parliament Festival was organized in 2019. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कंडेम्ड द इलीगल फेलिंग ऑफ ओवर 6,000 ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स ऑस्टेंसिबली फॉर इको टूरिज्म एट द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाउ हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। दिस नेशनल पार्क इज located in the Nainital district of Uttarakhand and it was established in the year 1936 as Helen National Park and rivers like Ramganga, Kosi, Sona Nadi passes through this national park and this park is also being honored as the place where Project Tiger was first launched in the year 1973 by the then Prime Minister of India Indira Gandhi. हमारा नेक्स्ट टॉपिक अंडर रिवर मेट्रो टनल से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated India's first under-river metro tunnel in Kolkata. The Howrah Maidan Esplanade section of the East-West corridor has the first transportation tunnel under any mighty river in India and it passes under the Hooghly River जिसके ईस्ट में कोलकाता है and वेस्ट में हावड़ा है। The stretch also has the deepest metro station in the country. The Howrah metro station is situated at around 32 meters below the ground. And before Howrah metro station, Delhi Metro's Hauz Khas metro station was the deepest station in India and जिसका डेप्थ 30 meters था। The Japan International Cooperation Agency, which is the world's largest bilateral donor agency, is the major funding agency for the East-West Metro project. हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसरो के लॉन्च पोर्ट से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of the second rocket launch port of ISRO at Kulsekarpatnam, which is situated in coastal Tamil Nadu's Toothukudi district, and the new launch port will provide a natural advantage to ISRO's future launches pertaining to the small satellite launch vehicle. Now, why is the new launch port is located in Tamil Nadu? So the trajectory followed by all launches from Satish Dhawan Space Center, which is situated in Andhra Pradesh, are longer as they follow a path which requires the vehicle to skirt eastward around Sri Lanka before taking the actual southward flight. This consumes additional fuel. However, the same would not be required for future launches from Kulsekarpatnam, which is geographically located several kilometers to the west of Colombo, and thereby allowing a straight southward flight and simultaneously saving the fuel available on board of small satellite launch vehicle. Now, यहाँ पर हम small satellite launch vehicle को भी discuss कर लेते हैं. So, it is developed by ISRO to cater for the launches of small satellites, and it has 3-stage launch vehicle and having a lift-off weight of about 120 tons and is 34 meters in length and 2 meters in diameter. वही हम small satellite launch vehicles के advantages की बात करें, so these are useful to launch small size satellites weighing anywhere between 10 to 500 kg into the low Earth orbit and they are low on cost and intended satellite insertion into the orbits take a shorter flight time. हमारा next और आज का last topic अय्या वाईकुंदर से related है। ये topic इंडियन एक्सप्रेस में आया था और हिस्ट्री सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। तमिलनाडु गवर्नर्स recent remark about the 19th century social reformer अय्या वाईकुंदर have evoked sharp reactions in the state. Now, who was Ayya Vaikundar? Born in 1809, he was the founder of Ayyavazhi sect. The teachings of Ayya Vaikundar focused on equality, fraternity, and the eradication of caste-based discrimination, challenging the established religious and social hierarchies of the time.
He also worked for the upliftment of lower caste. For example, he organized Samapanthi Bhojana or community eateries for peoples from all backgrounds. He would send his disciples to the homes of lower castes to eat with them. When lower castes were not allowed to fetch water from wells used by the upper caste Hindus, Vaikundar initiated the digging of common wells, which is also called Muthiri Kinarus. So friends, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थे. फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू.